Prashant and I met in Delhi around 5 months back. So it was an arranged setting. When I talked to her for the first time, that conversation, I think it lasted for around 40 to 45 minutes. The moment we met and जब हमारी बात हुई, एक दूसरे को जब जानने का मौका मिला, तो हमें पता चला कि हमारे बीच में काफी similarities हैं. And then एक confidence भी आया कि I see a future with him. So that's when I realized कि he can be my future life partner. तेरी मेरी जो हुई शुरू तो बात बन गई, ख्वाबों से भरी फिर है हमारी रात बन गई। आ चले कहीं वादियों में हम, तारों को सुनाए दास्तां। जब से हम मिले एक दूजे से, ना रहा जहां से वास्ता। तू इश्क है, तू सुकून है मेरा। And what I picked up during that conversation, that she was very clear in her mind what she can compromise, what she cannot compromise. So this was one thing. If you are getting a partner who is clear and who knows what is to be done, I think it is a very blessable quality to get in your partner. तू इश्क है, तू सुकून है मेरा, मैं चांद तू आसमां। तू ही सफर, हम सफर, तू मेरा, तू जश्न दिल का हुआ। One quality that impressed me a lot was कि निहारिका को पता था कि it takes time for a boy to earn everything, और वो मुझे वो टाइम देने के लिए तैयार थी। इश्क हुआ तुमसे इस कदर दिल को हमारे। The most I like about him is his caring nature. वो बहुत caring है, आपके लिए वो care करते हैं. He can sense कि आप अगर uncomfortable है किसी चीज़ से, so he can read between the lines. He can understand something which is not said, and these are the qualities you see. तो मुझे उनकी ये qualities बहुत अच्छी लगती है. पिछले 3-4 महीनों से जब हमारी शादी की बात, मतलब वी हैव बीन स्पेकुलेटिंग, डिस्कसिंग थिंग्स कि कैसे हम लोगों को प्लान करना है, ड्रेस सिलेक्शन, उसके साथ मैचिंग सेट, वो सब करना। तो फाइनली टुडे इज द डे जब मैं उसको ब्राइड की गेटअप में देखूंगा, जिसके लिए मतलब आई हैव बीन वेटिंग फॉर कपल ऑफ मंथ्स, आई थिंक आई शुड से। तो इट विल बी अ ब्लिसफुल मोमेंट। आई एम गोइंग टू चेरिश इट थ्रू माय लाइफ। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम। I think I have to thank God also. I got to see him, and it was by arranged prospect, मुझे पता है, but after starting to talk to him and after knowing each other, we felt कि we have this similar vibe, and धीरे धीरे we realized that we have started falling for each other slowly and steadily. But yes, there is a lot of love between us, and I hope it stays for time forever. I think I will have to gear up more than whenever she comes home after night duties, our 40-50 hours long shift. I should be the one to welcome her home back again and share the warmth of her life. It is challenging, but I want to do it. So, देखते हैं क्या होगा, but I'm willing to put my wholehearted effort. I think it will go good. Hi Prashant, my life partner, my friend, my husband. We are starting this journey, and let's be there for each other. And I want to grow old with you. I want to fall in love with you all over again every day. And let's enjoy this journey of marriage.